फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज ऑब्वियसली जेई के प्रिपरेशन के टाइम पे सपना होता है कि यू विल गेट इनटू एन आईआईटी और अ टॉप टियर कॉलेज। मैंने पहले ही जाते ही सीनियर से पूछा कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आई वाज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कौन सी कंपनी आती है एंड दे वर लाइक कोई नहीं। आपको लगता था कि आपका गोल पूरा हो जाएगा इस कॉलेज से, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। चाइल्डहुड सपना तो नहीं था सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का। कोडिंग इन सम प्लेस जहाँ पे आपको आपके वर्क का इम्पैक्ट बहुत क्विकली दिख जाता है। I just had a glimpse of hope कि शायद कॉलेज से प्लेसमेंट होगा। जब Amazon में कुछ बहुत सीवियर बग आ जाता है, आई थिंक जेफ बेजोस डायरेक्टली ही कम्स ऑन द कॉल। मैंने सुना है, इज इट ट्रू जब कोई बड़ा एसएलए मिस होता है? I work in the devices vertical of PayTM. So basically I work on the POS devices, the card machine devices for PayTM team. When was the last time that you checked in some code? मतलब कब किया था आपने आखिरी बार कोई कोड चेक? अगर मैं अपनी लास्ट चेक-इन की बात करूँ तो it was around a month back. Welcome everyone to the inaugural episode of the Destination X podcast series. Here we gather with those who have made their own definition of success. Destination X isn't a place, it's a feeling. It's that sweet, satisfactory feeling that you get after achieving what you wanted after years of hard work. It's the excitement of finally cracking the code. It's absolutely different for everyone. Absolutely sure, yeah. I think for musicians, it might be silencing their inner critic. For entrepreneurs, it might be, building up something that, creates an impact on the outer world. But for our guest today, it was to make sure that they reach to their destination X despite being from Tier 2 and Tier 3 college. So let's start with inviting Aniket. Yogita. And Soumya. Welcome guys, it's so good to have you on the first episode of the Destination X podcast series. You are like most of the Coding Ninjas alums जिन्होंने अपने college tag को या किसी भी circumstance को you guys did not let it define your success. You made your own path to the success. So first of all, why don't you start by introducing yourselves to the audience? Hi everyone, my name is Aniket and I work as a software engineer at PayTM. If you have ever made a card transaction from a PayTM POS device, so you would know that is me. And I have been working at PayTM for the past 1.5 years. I graduated from Punjab Engineering College, Chandigarh in 2022 and this is my first job out of college. So hi everyone, I'm Yogita. I'm currently working at AWS as cloud support engineer and I'm BTech 2020 graduate. I have 3 years of experience. I'm graduate from Deen Bandhu Choturam University of Science and Technology, Murthal. Hi everyone, I'm Soumya. I am having around 10 years of experience. Started working as an analyst in Xerox and now I am working as an AVP in a leading banking industry. Right, I think काफी versatile roles हैं. One is AVP, software engineer, cloud support engineer. तो हमारे पास multiple roles हैं. तो आज मजा आने वाला है. हम लोग काफी सारी चीजों के बारे में जानेंगे. But उससे पहले ना मेरा एक बहुत fundamental question है. That is हम लोगों में जो एक चीज कॉमन है, that is coding, right? And हम लोगों ने सबने थोड़ी थोड़ी coding कर रखी है. तो मेरे को ये जानना है यार वो कौन सा moment था? What was that exact moment जो ऐसा लगा कि यार हम लोग को ना कोडिंग करनी चाहिए, कोडिंग चालू करते? जैसा मैं कॉलेज में पहली बार गया था तो मेरे को पता चला था ये भी कुछ होता है. तो आई वांटेड टू नो योर पर्सपेक्टिव कि क्या हुआ. लेट्स स्टार्ट विद यू सौम्या. Okay, so it goes back to my childhood, Naman. So जब मैं छोटा था तो I used to play games and I used to play around lot of things on the programs and rest of the things. तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये चल कैसे रहा है, ये बिल्ड कैसे किया और क्या मैं अपना कुछ बना सकता हूँ इस सिमिलर सा जो शायद मुझे बहुत सही लगे. तो वो जो स्क्रैच से बिल्ड करने की क्यूरोसिटी होती है ना, दैट वाज द मोटिवेशन व्हिच वाज समथिंग दैट पुश्ड मी टुवर्ड्स कोडिंग एंड देन एवरीथिंग फॉलोड. आई थिंक वो कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें ना थोड़ी फैसिनेट करती है. मैं भी जब वाइस सिटी खेलता था तो इट वाज लाइक काफी मजे आते थे, काफी हैक्स करके गाने चलाते थे गाड़ियों में. तो इट वाज नाइस.
quite fun time. Similar सा ही सबका trajectory रहता है. Right. Let's start with you. Yeah, so Yogita. for me it was like I landed into B.Tech. So अब मेरे को था कि B.Tech में I have to do my best. So हमारे कॉलेज में सिर्फ one company used to come. Fidelity was a company and उसके लिए जैसे पता चला senior से they asked for coding. So that's where I started learning coding. I think अनिकेत का भी थोड़ा सेम ही होगा, but still बता दे. हाँ श्योर, मतलब मेरा भी चाइल्डहुड सपना तो नहीं था सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का फॉर श्योर, बट इट वॉज वेरी सिमिलर टू योगिता. आई लैंडेड इन बीटेक एंड बाय डिफॉल्ट मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आ गया. एंड दैट्स हाउ आई न्यू कि इलेक्ट्रिकल में तो मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है और इसमें कोई करियर स्कोप भी नहीं है. कोडिंग वॉज समथिंग दैट आई हैड डन अ लिटिल बिट ऑफ इट इन स्कूल, सो दैट इज समथिंग आई थॉट कि आई कुड डू इट एंड आई ऑल्सो फाउंड इंटरेस्ट इन इट बिकॉज मुझे लगता है कि कोडिंग इज सम प्लेस जहाँ पे आपको आपके वर्क का इम्पैक्ट बहुत क्विकली दिख जाता है. दैट इज इफ यू इधर गेट अ बग और यू गेट अ सक्सेस एंड इट्स अ वेरी क्विक फीडबैक लूप. सो दैट इज समथिंग आई फाउंड fascinating about coding and I thought this is something I should do. So yeah. So that curiosity of you guys has led you so far. So guys, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को पीछे पास में लेके जाना चाहूँगा. I'd like to know कि यार what was your first day at college like? क्या feeling थी? Did you guys feel like कि हाँ यार यहाँ से जो मेरे को कंपनी में जाना है या फिर एक गोल होता है ना एक प्लेसमेंट का कि I want to see myself like this in the next 4 to 5 years. Did you feel like कि वो पूरा हो जाएगा यहाँ से और how did you feel about it? Just candidly speaking. Right. So Shaurya, first day of college obviously JEE के preparation के time पे सपना होता है कि you'll get into an IIT or a top tier college or a CSE branch to get a good placement, but unfortunately ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे साथ. I landed into electrical engineering from a tier 2 college, so I knew that I had to put in extra efforts on my own to get into where I wanted to be eventually. And versus first day of office was very different. I had landed after working through 4 years of college where I wanted to be, and it was quite different from what first day of college was. First day of office, the onboarding sessions, I knew I was excited about it, and I knew the journey from here is going to be smooth because I had worked hard for it and had come where I wanted to be. Was it same as that you imagined on the first day of your college? Or pretty close to it? Pretty close to it, Pretty I would close say. to it. Yeah. So for me it was like मैंने पहले जाते ही सीनियर से पूछा कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आई वाज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कौन सी कंपनी आती है एंड दे वर लाइक कोई नहीं. सो इट वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग, बट देन आई रियलाइज एट दैट पॉइंट कि मेरे को खुद को ही आई हैव टू प्रिपेयर ऑन माय ओन, या खुद से आई हैव टू एक्सप्लोर व्हाट ऑल द ऑप्शंस आई हैव. And then first of office was like I was sure okay like now I have done something, so इतना stressed नहीं था उस time पे, so it was fine. Soumya. So for me, जैसा कि शौर्य ने कहा कि आपको लगता था कि आपका गोल पूरा हो जाएगा इस कॉलेज से, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था. और मुझे कुछ खास उम्मीद भी नहीं थी क्योंकि पास्ट हिस्टोरिकल डेटा दिख रहा था कि बहुत ज़्यादा कंपनीज आती नहीं है. तो सीनियर्स ने गाइड किया, उन्होंने भी बोला कि आपको मतलब अलग से एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, अपने फंडामेंटल्स पे काम करो और बाकी चीज़ें देखो. तो आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स द कोडिंग साइड ऑफ द थिंग्स. बट या व्हेन आई लैंडेड अप इन ऑफिस तो इट वॉज अ डिफरेंट फील, इट वॉज गुड. एंड जितने अप्रीहेंशंस थे मेरे, मुझे जो भी चीज़ें लग रही थी कि यार पता नहीं कैसा होगा, बट इट वॉज ऑल सॉर्टेड. मैनेजमेंट वॉज सपोर्टिव, कलीग्स वर देयर, सो इट वॉज अ स्मूथ वन फ्रॉम देयर. बट या वन थिंग आई लर्न कि हाँ यहाँ आने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप मुझे कोडिंग छोड़नी है और मुझे एक्चुअली वर्क करना होगा यहाँ से भी एक्सेलरेट करने के लिए अपने करियर को. आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है टू रियलाइज़ कि एक गाइडेंस जो है, छोटी सी गाइडेंस भी, जैसे अनिकेत ने भी कहा, ठीक है, सौम्या ने भी कहा अभी कि एक थोड़ी सी सीनियर्स की गाइडेंस भी काफ़ी एक्सेलरेट आपको कर देती है एंड इट पुट्स यू ऑन द राइट पाथ. फ्रॉम दैट यू कैन टेक इट फॉरवर्ड एंड अपने एफर्ट्स डाल के ही आपको फिर आगे करना रहता है. हाँ यार, पता है मैं अनिकेत की बात से काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट करता हूँ. सेम कॉलेज से है मेरे, तो चलो इसके साथ एक अच्छी बात ये थी कि इलेक्ट्रिकल में था, तो मेरे साथ ये ना ऑल टुगेदर बहुत डिफरेंट था क्योंकि मैं नॉन सर्किटल ब्रांच में था. आई स्टार्टेड अप विद प्रोडक्शन इंजीनियरिंग. तो यू नो जब मैं फर्स्ट डे मेरा कॉलेज का था तो प्रोडक्शन बुलाते थे. कॉलेज में होता है यार. तो यू नो वहाँ से आपको अगर आप ये जॉब सोच रहे हो तो ऐसा नहीं होता, बिकॉज यू नो आपका डोमेन बिल्कुल अलग होता है. यू डू मैन्युफैक्चरिंग. तो सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट डे ऑफ गोल था ना वो ये था कि यार सबसे पहले अपग्रेड करा के अपन को एक अच्छी ब्रांच चाहिए. तो माय फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज वेंट लाइक कि यार
6 महीने है, पहला सेमेस्टर है, थोड़ा अपग्रेड लेते हैं, लेट्स गो टू सम सर्किटल ब्रांच। तो अब मेरी फिजिक्स स्ट्रांग थी तो मैं वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स में गया। देन देयर थर्ड सेमेस्टर के बाद मेरे को थोड़ा कोडिंग मैंने चालू किया, आई स्टार्टेड कोडिंग। ये ऐसा था मेरा मतलब पहला जर्नी। तो पहला दिन तो मेरा इट वाज लाइक टोटली खराब सा कि यार कहाँ आ गए। फिर फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, फर्स्ट डे ऑफ ऑफिस, तो जो बीच की जर्नी है उस पर बात करेंगे, लेकिन आई वाज एबल टू क्रैक माइक्रोसॉफ्ट। और फिर माइक्रोसॉफ्ट का जो दिन था, इट वाज वेरी ऑसम फीलिंग, यू नो, going to Bangalore, visiting prestige firms and you know seeing that big building. Bangalore में पहली बार गया था तो it was like way too much fun. इतना अच्छा ऑफिस, इतनी सारी facilities and you know you actually meet with people, है ना, जिनका बहुत diverse background होता है, not just you know in terms of what technology that they have worked on but culturally भी. You see people from North India, from West, from here. तो it's actually fun, you know, meeting all those people. So my first day at office went like pretty well. मतलब बहुत मजा मेरे को आया, काफी मजा आया. Now coming to this very important question कि placements की बात करते हैं, तो हमारा भी कॉलेज जर्नी पे बात हो रही थी. How confident that you were? How confident you were कि तुम लोगों को कॉलेज के टाइम प्लेसमेंट मिल सकता है क्या? मिल सकता है नहीं, मतलब इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं. तो let's talk about placements in your college. Okay, so I'll be very honest here. I just had a glimpse of hope कि शायद कॉलेज से प्लेसमेंट होगा, but till I will say थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर आते आते ना पिक्चर काफ़ी क्लियर हो जाती है. उसे पता चल जाता है कि यार कुछ सिलेक्टेड कंपनीज हैं और उनके भी चांसेस कम ही होते हैं कि वो आएंगी भी, कि उनका लास्ट मिनट कैंसिल भी हो सकता है. तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सीनियर्स का गाइडेंस था और उन्होंने बोला था कि ऑफ कैंपस ड्राइव्स बहुत ज़्यादा हैं. अच्छा. तो उसमें आपका आराम से हो जाएगा इफ़ योर फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड आप अच्छे से कोडिंग पे वर्क कर रहे हो. तो दिस वाज वेरी क्लियर फॉर मी फ्रॉम द सेकेंड ईयर इटसेल्फ, एंड तब मैंने उस पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना शुरू किया. एंड अल्टीमेटली हाँ हुआ, वही ऑफ कैंपस ही हुआ, बट या it was all sorted after a while. Let me ask you a very typical question here कि तो आप अभी I think आपको 10 years का experience हो चुका है. तो let's talk about कि आपके बैच के जो बच्चे थे, how many of your friends were placed in the same company जो आपने पहली बार ज्वाइन करी थी. तो अगर आपको कुछ नंबर याद हो. आई थिंक बहुत कम थे जो मेरे साथ ज्वाइन हुए थे, बिकॉज ऑफ कैंपस में इट वाज अ वेरी डाइवर्स थिंग. बट या अगर मैं टोटलिटी की बात करूं तो जितने भी दोस्तों से अभी तक कांटेक्ट है, एवरीवन इज एट अ वेरी गुड प्लेस नाउ. ये मेरे को ना शौर्य समझ आई है, बताया मैंने भी देखा है कि यू नो इनफैक्ट अनिकेत को भी पता है कि मेरे कॉलेज के बच्चे हैं, आई हैव सीन पीपल यू नो दे आर डूइंग वेरी गुड. तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से. लेट्स टॉक टू योगिता, आपकी क्या थॉट्स है इस पर? मेरे लिए ऐसा था कि कॉलेज से प्लेसमेंट तो हो जाएगी, बट उस प्लेसमेंट से मैं सेटिस्फाइड होंगी, दैट वाज द क्वेश्चन फॉर मी. सो ऑफ कैंपस ही था लाइक. और टू बी ऑनेस्ट लाइक टीयर 1 और टीयर 3 कॉलेज में मेरे को ये डिफरेंस मेनली लगता है कि गाइडेंस इतनी नहीं मिल पाती है. आपके अराउंड इतने लोग नहीं होते जिनके एग्जाम्पल से यू कैन लर्न. सो वो उसकी थोड़ी कमी थी कॉलेज में. लाइक रोल्स भी इतने पता नहीं होते, बस इतना पता होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर है या फिर कुछ रोल्स ही पता होते हैं. सो उसका था कि हाँ रोल कौन सा चूज़ करना है. एंड इवन कंपनीज का भी 2-4 कंपनीज जो मेन पता होती हैं. तो फिर इस चीज़ का था, तो उसको लाइक कॉलेज की वजह से मेरे को ऐसा लगा कि इतना होराइजन नहीं बढ़ पाया. ओके. अनिकेत? I think similarly पता था. I think you would also relate to it. अपने कॉलेज में प्लेसमेंट्स तो अच्छे होते हैं, but the difference is कि सिर्फ कोडिंग प्लेसमेंट्स ही होते हैं. Majority of the companies that land up for placements in our college are for software developer roles. And being in electrical and you as well in electronics, we knew कि हमें यहाँ रह के तो हमारा कुछ नहीं हो रहा. We had to put in efforts. And I think the other good thing about our college was कि senior support was good enough. So I got a lot of guidance from my seniors who told me कि अगर तुम्हें coding placements crack करनी है तो कौन से courses करने पड़ेंगे, कैसे track करना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा. And then there are internship placements versus full-time placements. So how do you have to start preparing from second year or later part of the second year onwards to crack those companies? So I think that was pretty much it. And there was good enough guidance for me from seniors and from Coding Ninjas, of course, the course that the seniors recommended to me. So it was a smooth journey from there on. तू तेरा एक्सपीरियंस बता. तूने भी कोडिंग निंजा से कोर्स किया एंड सेम लेट्स टॉक अबाउट यू एज वेल. मेरा तो काफ़ी डाइवर्स बैकग्राउंड रहा है इसके मामले में. आई स्टार्टेड आउट विद
क्लासरूम कोर्स लिया था मैंने 2019 में, जब कोडिंग निंजास का फॉर C++ DSA, एंड पोस्ट दैट कोविड हिट, ठीक है, तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस वगैरह जो चलता रहता वो चलता रहता था, टाइम बहुत था कि क्लासेस तो ऑनलाइन होती थी तो टेस्ट वगैरह कुछ देने नहीं, ठीक है, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन सोचा कि यार कुछ डिफरेंट करते हैं, तो DS and ML कोर्स लिया कोडिंग निंजास का, तो पोस्ट दैट, फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एंगेज का आया, देन फिल्ड अप दैट, फिर वेब डेव सीखी, सो ऑल इन ऑल पूरा एक डिफरेंट होता है ना कि स्टार्टिंग में कि हाँ यार 3 ऑप्शंस आपके पास, या तो कॉम्पिटेटिव कर लो या डेव कर लो या मशीन लर्निंग कर लो, मेरे को तीनों ही करने पड़े अपने एक्सपीरियंस में, तो आई हैव दैट एक्सपीरियंस एंड आई थिंक कि अब वो काम आता है हर जगह, दैट हेल्प्स मी अ लॉट हियर। सो थोड़ा सा अब इसको और थोड़ा सा लेके जाते हैं कि यार हमने देखा कि व्हाट यू इमेजिन्ड, लाइक है ना, कि आपका फर्स्ट डे में आपने क्या इमेजिन करा था, व्हाट योर जॉब टर्न्ड आउट टू बी, हाउ इज इट फॉर यू ऑन दीज डेज, अभी आप लोग का व्हाट्स द टिपिकल डे ऑफ योर वर्क लाइक? Sure. So, as I think said earlier, I work in the devices vertical of PayTM. So basically, I work on the POS devices, the card machine devices for PayTM team. So my role basically involves dealing with the product teams, business teams, operations teams, working with them to gather requirements and working with them to understand the features that we are going to bring in for our software on these POS devices, and then also dealing with the operations teams to monitor the application releases which are in the market right now, monitor how they are working fine or not and how the devices are working. Also work on certain production bugs that are raised from merchants, and we try to, because they're high priority bugs and we Cashback have ज़्यादा जा to रहा है। I mean we have to resolve them very very quickly ठीक है। because बहुत ज़्यादा वो fund related होता है. So yeah, that is how meetings, and then I have to basically focus for code focus के लिए मुझे apart from meetings time allot करना पड़ता है because I need to code apart from meetings also, the major part of my job. So yeah, that is pretty much it how मेरे my ख्याल day ये वाली looks. प्रॉब्लम हर जगह है, मीटिंग्स 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 आपको और कुछ काम करने के लिए जगह नहीं मिलती, यू हैव टू शेड्यूल इट डाउन इन अ It's डे। better to set up some focus hours. अपने correct. calendar में थोड़ा focus hours mark कर दो. That's at least what I do. Yogita, coming back to you. Yeah, so my role is cloud support engineer, which I think नाम से ही पता चल रहा है. So different companies, from small startups to big companies like Netflix, NASA, Adobe, like they use AWS. So I'm part of database team. So we help the customer if they're facing any issue. If the database is down, they'll reach out to us and we'll troubleshoot and check the resources and guide them and provide them suggestions. This is how you can optimize your cost or optimize your performance. So yeah, and in a day we talk to around 2 or 3 customers maximum. एक क्वेश्चन है मेरा, मतलब आई थिंक श्योर तुमने सुना है कि जब Amazon में कुछ बहुत सीवियर बग आ जाता है, आई थिंक जेफ बेजोस डायरेक्टली ही कम्स ऑन द कॉल, मैंने सुना है, इज इट ट्रू? जब कोई बड़ा SLA मिस होता है तो कुछ ऐसा हुआ है, कोई ऐसा इंसिडेंट जिसमें जेफ बेजोस आके डांट रहे हैं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, हम अपने लेवल पे ओके, दैट्स रियली नाइस। कमिंग टू यू सौम्या. Okay, so for me, day to day was like जैसा कि शौर्य ने बोला, it's lot of meetings and then उसके बाद अगर मैं day to day की बात करूँ तो mostly I am into process automations, तो मुझे देखना पड़ता है कि कितने सारे processes चल रहे हैं. I also look out for the verticals, तो वहाँ पे processes automated हैं नहीं, DevOps side की things हैं, CI/CD pipelines are implemented, everything is running fully functional, सब कुछ चल रहा है. और उसके अलावा देयर आर मोर ऑफ स्टेक होल्डर मैनेजमेंट एज वेल एट दिस पोजीशन, सो दिस इज़ ऑल्सो देयर. इफ़ आई टॉक सम एक पास्ट एक्सपीरियंस पे जाऊँ, अगर मैं गैप जेमिनी दैट आई वाज इंजीनियरिंग मैनेजर देयर, तो वहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट IoT बेस्ड थे. तो अगर बग्स की बात करें तो वहाँ पे ऐसा आता था कि लेट से कॉफ़ी मशीन है, अगर वो 100 RPM से ऊपर चल रही है तो सेंसर्स आपको बता देते थे कि यू हैव टू सेंड अ साइट इंजीनियर क्योंकि ये सेंसर से ज़्यादा चल रहा है. ऐसे बहुत सारी मल्टीपल IoT डिवाइसेस थी जो उनके डिफरेंट साइट्स पे इंस्टॉल्ड होती थी, तो वो प्रोजेक्ट कुछ डिफरेंट था. सो इट्स काइंड ऑफ सेम थिंग हियर. आई थिंक आपने, आई थिंक you're मैनेजर फ्रॉम क्वाइट सम टाइम नाउ, आपके पास मैनेजरल रोल है. तो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेट मी आस्क कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम दैट यू चेक्ड इन सम कोड? मतलब कब किया था आपने आखिरी बार कोई कोड चेक? ओके, तो कोडिंग से टच ख़त्म नहीं होता है. इट्स कम्प्लीटली अप टू यू हाउ यू वांट टू
like go into your career. But अगर मैं अपनी last check-in की बात करूँ तो it was around a month back. A month back. चलिए ये तो आपके खुद के internal system में हो गया. Let me ask something related to जो हमारे viewers को something that our viewers would like to hear. When was the last time you submitted a question on LeetCode or whatever coding platforms that you use? Okay, so last time I submitted something related to Kubernetes on Stack Overflow, but that is around, I believe, 4 months, 4 to 6 months. Yeah. Okay, so Soumya is a DevOps fan, I think. So एक question, sure ये बता कि तूने आज तक अभी I think तेरे को जितना टाइम हुआ है, what's the best thing that you have built in the company? मतलब कोई feature क्या किया है जो तेरे को सबसे best part लगता है तेरी अभी तक का करियर का? Okay, so मेरे जो सर्विस है, ठीक है, जो मेरा टीम है उसमें इट वाज नेसेसरी सो दैट कि हम लोग आगे क्लाउड्स को, न्यू क्लाउड्स को, द क्लाउड्स दैट वी हैव कमिंग अप फॉर वेरियस कंट्रीज, ठीक है, उनको सपोर्ट, उनकी फंक्शनैलिटी सपोर्ट करने के लिए इट वाज नेसेसरी कि हम लोग अपने रिपोजिटरी के सर्टन पैकेजेस को, लाइब्रेरीज को, वी हैड टू अपग्रेड इट टू सर्टन वर्जन, एंड दैट वाज नॉट वेरी इजी टू डू बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट नेटवर्किंग सर्विसेज जो कि वो सेम पैकेज यूज कर रही हैं, पैकेज वर्जन यूज कर रही हैं. सो आइदर इट वाज अ टास्क ऑफ अ टीम हु कुड कम अलोंग एंड कि हाँ यार ये चेंज करने से ये छिड़ेगा, मेरी उसका सर्विस का ये खराब होगा, वो खराब होगा. सो इट वाज आइदर दैट, तो वो एक अलग पैरेलल एफर्ट चल रहा था. अपार्ट फ्रॉम दैट मी एंड माई बडी वाज वर्किंग ऑन इट, एंड हम दोनों तो नए थे. हम दोनों को जब आपको पता होता है ना कि यार ठीक है मेरे को नहीं पता कि क्या फटेगा, तो आप कुछ भी जाके छेड़ते हो, ठीक है, बस आपको ये नहीं पता कि हाँ क्या फटेगा, हमने सब छेड़ दिया, एंड बाय चांस हमने कुछ ऐसा छेड़ दिया दैट वर्क्ड. सो द यूएस फोक्स वर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ कंप्लीटिंग इट ऑन देयर ओन, एंड कल को हम लोगों ने दोनों ने जाके कहा कि यार ये तो देखो हो गया, वी रैन द इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सारी टेस्टिंग करी एंड दैट वर्क्ड, एंड इट वाज लाइक कि अरे यार ये तो ऐसे भी हो सकता है. इट वाज अ न्यू मेथड हाउ वी केम अप विद दैट. Experimenting. It was experimenting, not knowing the boundaries and experimenting. Plain that. So I think इस चीज से हमें ये सीखना चाहिए कि भाई टेस्टिंग करके कोड पुश करना है. हाँ, कोड टेस्टिंग करके पुश करना है, छेड़ दो अपने उस पे लोकल मशीन पे, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, बट पुश टेस्टिंग करके करना है. Always try to test things, unit test लिखो, integration test लिखो, so that your product right. It stays stable. प्रोडक्शन में पुश करने की जल्दबाजी भी नहीं करनी है. हाँ, मतलब take your time. तो test driven approach रखो अपनी, TDD approach. That's something that you guys should learn. क्योंकि इससे मेरे को ध्यान है यार, I had a friend who raised a 7 a privacy incident, so इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा इस चीज पे ध्यान देना. ठीक है, let's come to Aniket on this question. क्या सबसे बेस्ट चीज जो तूने अभी तक बिल्ड करी है? I think the best thing that I've built at working at PayTM, so again coming to the card machine devices, so if you have imagined, matlab, if you go to a restaurant or a hotel to eat, you usually tip the waiter if you are paying, so tip आप extra ऐसे cash में देते हो, even if आप UPI कर रहे हो तो tip आप extra देते हो. But now we have built a feature जिससे आप while doing a card payment you can tip the waiter on the machine itself. So that is tip flow adjustment. That is the feature which I built from scratch, right from business requirements, product requirements to release and into operations. So that is something I'm really proud of. I got to work through the back end, the front end, how the UI looks, and how many users will be looking into it and everything. So I think that was a huge success also in terms of how much it let PayTM launch into new ecosystems and generate additional revenue also for its POS business. So that is something that is. I won't ask the revenue generation, but कैसा लगता है यार, seeing your own feature coming out live, because I am a back-end engineer, तो मेरे को ना proper ship होते हुए नहीं दिखता. I don't get to know कि यार कितना revenue generate होता है. तो ये तरीके का, if you get to see that view, how does it feel like, shipping out something to end customer? और वो भी I think full stack ही है, back-end, front-end. तो how does it? That is really motivating. I mean, आप ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हो एंड फिर वेटर आके आपको एंड में वो पेटीएम की मशीन देता है, फिर आपको बिल निकाल के देता है, फिर आप उसमें टिप भी करते हो, फिर कि वो जो बिल निकल रहा है उसके डिटेल्स भी आपने कोड करे हुए हैं. तो इट इज रियली फैसिनेटिंग एंड वेरी मोटिवेटिंग टू लुक कि हाँ कुछ तो रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट. कभी ऐसा हुआ है कि वेटर को कहा कि हाँ ये मैंने बनाया, ये मेरा काम है. हर बार हुआ है. आई डोंट मिस अ चांस टू टेल कि हाँ ये तुम्हारा फायदा हो रहा है ना, मैंने कराया. एग्जैक्टली, आई नेवर मिस अ चांस. मैं बोल ही रहता हूँ. इवन मेरे फ्रेंड्स भी मैंने बोल रखे हैं, वो भी जाके रेस्टोरेंट में बोलते रहते हैं ये तो अनिकेत ने बनाया. तो पब्लिसिटी वहां से जनरेट करते हैं. सौम्या आप बताओ. Okay, so the building part अगर मैं अपना बोलूँ
तो मैंने जब यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप ज्वाइन किया था तो उस टाइम पे हमारे पास एक क्रूशियल दिक्कत ये थी कि बिकॉज इट्स अ हेल्थ केयर इंडस्ट्री एंड द डॉक्यूमेंट्स वेर वेरी वास्ट, तो होता क्या था कि कोई भी न्यू जॉइनर आता था ना उसको गेटी टाइम में बहुत दिक्कत होती थी। तो दैट इज़ मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब चैट जीपीटी वाज नॉट दैट पॉपुलर, तब मैंने इनका कोर्स लिया था कोडिंग निंजा का DSML वाला, एंड वी बिल्ट अ चैट बॉट फॉर आवर इंटरनल एप्लीकेशन। तो उससे बस न्यू जॉइनर को कोई भी तरह का डाउट हो, इट वाज प्योरली ऑन LLP, इट वाज नॉट दैट एक्यूरेट जितना आज होता है, बट हाँ जो भी उसको क्वेरीज हो, जो भी क्वेश्चंस हो, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अदर पीपल हु आर अगर अवेलेबल नहीं है उसके डाउट्स को इमीडिएटली रिजॉल्व करने के लिए, तो इट वाज अ फुल फ्लेज्ड ग्लॉसरी जिसपे हमने उसको ट्रेन किया था पूरे बॉट को, एंड इट वाज प्रीटी गुड। मतलब वो हमने सर्वर्स पे डिप्लॉय भी किया, सब कुछ किया, एंड आई डोंट नो अब वो लाइव है कि नहीं है, बट या दैट वाज समथिंग वी बिल्ट। So I think it's a win for coding ninjas कि आपने कुछ यहाँ से सीखा राइट, and you rightly implemented it in your internal मैंने उस system. यूज केस की वजह से ही सीखा था। Okay, so I think that's one good thing to hear. So I'll talk about myself कि मैंने क्या build किया है. I'm part of Viva Insights team. It's under Viva suite. ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है that actually gives you insights. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा करी है, तो मैं कुछ मेट्रिक्स बताऊंगा जैसे फोकस आवर्स, कि मेरे कंपनी के अंदर कोई सब्सिडरी है जिसे माइक्रोसॉफ्ट में E+D C+AI होता है, तो हाउ इज माई सब ऑर्गेनाइजेशन डूइंग, ठीक है, सब ऑर्गेनाइजेशन के मीटिंग आवर्स कैसे हैं, फोकस आवर्स कैसे हैं, आर एम्प्लॉइज गेटिंग इनफ फोकस आवर्स, तो ऐसे काइंड ऑफ मेट्रिक्स इज व्हाट वी एक्चुअली बिल्ड। तो इसमें मेरा काम ये है दैट आई एम वन पार्ट ऑफ हाइब्रिड क्रू, राइट, along with data quality, I own data quality। तो हाइब्रिड क्रू का काम ये है कि इट एक्चुअली गिव्स यू इनसाइट्स ऑन टॉप ऑफ हाइब्रिड थिंग्स, यानी हाइब्रिड को रिलेट करके। अभी फ्रॉम पास्ट लाइक 1-2 सालों में आप लोगों ने देखा है कि कोविड की वजह से अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम, हफ्ते में 2 दिन आना, हफ्ते में 3 दिन आना, तो लीडर्स को एक बहुत प्रॉपर इनसाइट चाहिए होती है, हाउ डू दे बिल्ड, ठीक है, वो कैसे अपने डिसीजंस बिल्ड करें कि किस दिन आना है, और इसके साथ एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज अटैच है जो है, आज अगर तुम वर्कफोर्स देखोगे, राइट, ऑफिस में कितनी स्पेसिंग वगैरह है, तो देयर आर मल्टीपल डिसीजन दैट एक्चुअली आर डिपेंडेंट ऑन कि हाउ आर एम्प्लॉइज डूइंग, तो हम उस तरीके के इनसाइट्स जनरेट करते हैं। अलॉन्ग विद दैट डेटा क्वालिटी, तो डेटा क्वालिटी इज बिकॉज हम लोग जैसे इनसाइट्स जनरेट करें दैट कम्स बिकॉज ऑफ सम डेटा सोर्स, और नाउ डेटा कैन बी योर HR डेटा, या फिर तुम्हारे सिग्नल्स डेटा जो आता है, सिग्नल्स डेटा इज प्राइमरीली दैट वी गेट फ्रॉम IP एड्रेसेस एंड हमारे जो मेल बॉक्सेस होते हैं, मेल बॉक्सेस के थ्रू सेंड मैसेज और ये सब जो सिग्नल्स होते हैं, सो वी कैलकुलेट डेटा क्वालिटी ऑन टॉप ऑफ देम, सो दैट इज typical piece that I own. Along with that, मेरा जो दिन जाता है that goes in ICMs. ICMs is production incidents. I am the ICM champ from our team, along with that learning champ. तो मैं इस तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो ये मेरा दिन इसी में जाता है. This is how my actual day looks like. Okay, so Naman, I want to ask something because Okay, you yeah. said about hybrid work policy. So जैसे आप ये डेटा शेयर करते हो लीडरशिप से, इट्स क्वाइट गुड टू नो फॉर मी कि ये चीज़ भी कंपनीज ट्रैक करती हैं, बट बेसिस ऑन दैट इनसाइट्स या जो भी आपने पास में हिस्टोरिकल डेटा भेजा, आपको क्या लगता है कि दीज पॉलिसीज विल बी देयर फॉर सम लॉन्ग टाइम, 2 दिन का वर्क ऑफिस से काम करना और बाकी दिन घर से, या फिर इट विल बी इन फ्यूचर इट विल गेट एलिमिनेटेड and everything will be back to office? I think सौम्य जो आपने क्वेश्चन पूछा, that is typically एक डिसीजन जो लेगा उसके ऊपर डिपेंडेंट करता है, ठीक है, so I think from my perspective, if outcome is good, right, कि collaboration hours आपके अच्छे हो रहे हैं, I'm talking about the metrics that we have in our product, तो collaboration hours अच्छे हैं, employees are getting enough time when they are working hybrid, ठीक है, and also employees because they are working from office, उनके पास collaboration hours, focus hours, one-on-one meetings with managers, they're getting enough learning time. ऐसे तरीके की metrics if they are coming out to be good, I don't think companies would have problem in enforcing hybrid workforce, because and in fact I have seen because of the surge in jobs जो भी COVID के बाद, because टेक इतना ज्यादा राइज हो गया, हॉटस्टार अपने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है, करोड़ों में व्यूअर्स आ रहे हैं, एंड टीम्स, गूगल मीट, स्केल पे बहुत ज्यादा हो गया, सो दीज कंपनीज एक्चुअली रिक्वायर इंडिविजुअल्स, उनको बहुत ज्यादा लोग चाहिए, तो फॉर मैनेजिंग दैट स्केल अप यू कैन नॉट efficiently use a office space, तो उसके लिए हाइब्रिड भी थोड़ा करना पड़ेगा, which companies are now enforcing कि थोड़े दिन आप आओ, थोड़े दिन घर पे रहो, and they are actually encouraging so that you have mental peace. So I think if you have proper metrics और सब कुछ सही जाएगा, along with कि जो product है and the company, if they are earning,
ठीक है, उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो आई डोंट थिंक देयर वुड बी अ प्रॉब्लम. सो दिस इज व्हाट आई फील. बट अगेन मेट्रिक शुड बी गुड. जो आपके जो प्रॉपर मेट्रिक्स है, दैट एम्प्लॉय शुड गेट इनफ टाइम, एंड जो आपकी एक्चुअली जो आपको डिलीवर करना है, दैट इज गेटिंग डिलीवर्ड इन टाइम, वेदर द एम्प्लॉय इज हाइब्रिड और वर्किंग ऑन साइट. आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ प्रॉब्लम फॉर द कंपनीज. So from you, I'm getting to know that companies are tracking these many matrices. Yes. Before that, I used to think it's all about happiness index of employee. और द लिंक्डइन ऑनगोइंग डिबेट की वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए, वर्क फ्रॉम ऑफिस. अभी पता चल गया कि उसकी कोई इम्पैक्ट नहीं होता. लिंक्डइन की डिबेट लिंक्डइन पे रहती है. आई गेस जैसे नमन आपने कहा कि इट्स अबाउट द एक्सेस, है ना, कि अभी कोविड के बाद लोगों के पास थोड़ा सा फ्री टाइम भी आ गया था. पीपल स्टार्टेड टू थिंक अबाउट कि यार मेंटल टाइम ऑफ भी चाहिए, है ना, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है. तो एक थोड़ा सा ओवरऑल चीज़ों पे थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ गया है, प्रोडक्ट्स पे, टेक्निकल प्रोडक्ट्स पे एक्सेस लोगों का और ईज हो गया है. इंटरनेट, क्योंकि कोविड टाइम में तो यू हैड टू हैड इंटरनेट, वरना तो उसके अगर आपका काम ही नहीं होगा, राइट. यू वर लाइक लॉक्ड इन अ बॉक्स. तो सब एक्सेस बढ़ गया है, वॉल्यूम उसकी चीज़ों की बढ़ गई है, तो सराउंडिंगली प्रोडक्ट्स जितने थे वो भी बढ़ गए हैं. लाइक पेटीएम का अगर मैं बात करूँ तो ऑन अ वेरी कंपैरेटिव नोट, कोविड से पहले बहुत कम यूज़ होता था. एंड अभी यू डोंट कैरी योर वॉलेट, बट फोन लेके चलते हो कि यहाँ पेटीएम कर दो फटाफट, यूपीआई कर दो, है ना. सो अकॉर्डिंग टू दैट, लाइक I just want to touch upon a point कि यार what was that moment in your life कि a certain piece of tech kind of changed your life या फिर perspective आप लोगों का change करा. I want to talk about that. I felt like, for example, Paytm is obviously one example, but the other one I feel like is, let's say, Uber, Ola, or ride-sharing apps. I think so. Tech in that sense has been very democratizing for our space, because पहले what you would do, you would go out और आपके पास 2-3 रिक्शे वाले होते थे, वो आपको 500 रुपये बोलेंगे कि जाना है तो आपको देने पड़ेंगे, बिकॉज सारे 500 बोलेंगे. देयर वाज नो स्पेस जहाँ पे आप नेगोशिएट कर पाओगे, इतना स्पेस नहीं होता था. नाउ बिकॉज ऑफ द टेक बूम, ऑल ऑफ द कंपनीज आर ट्राइंग टू maximize user experience and user happiness, right? And do work for the users, the end user in that case. So the increasing competition in this space is also working in, obviously, in the favor of the companies that are doing it, but also with the increasing democratic space, I think users के पास इतने ज़्यादा option है. आप Uber कर लो, Ola कर लो, InDriver कर लो, Rapido कर लो, तो वो price wars की वजह से I think the users also benefiting. Win-win situation हो गया दोनों से. Right, win-win situation. It's like a network loop, right? कि Correct. आपके users अगर बहुत सारे आ रहे हैं, it would mean कि दूसरी साइड को भी, आपके राइडर्स को भी बहुत फायदा हो रहा है. जितने नंबर ऑफ राइडर्स आपके बढ़ेंगे, अवेलेबिलिटी टू द यूजर्स वुड बी ग्रेट, है ना, प्राइसेस वुड गो डाउन एंड इन टर्न यूजर्स वुड इंक्रीज. Correct, exactly. What about you, Yogita? So, access to technology is basically most important thing I feel is access to education, because now it's like कि कोई भी कहीं भी बैठ के कहीं भी पहुंच सकता है because of access to technology. And like I had a junior in my college. He was a farmer's son and he cracked Amazon Germany as SG. So that was really inspiring कि because of technology, because of the content that is available, different courses, he was able to do this. So, that is, I think, is amazing. Right, work, WFH is not only work from home, it's now work from hills too. So all thanks to internet. And I think COVID से पहले Zoom और Google Meet किसी को पता भी नहीं था, but after that it has really eased in our lives की अब it has become very easy. Soumya, what about you? So access to tech, जैसा कि इन दोनों ने बोला, that definitely is changing lives. और अगर मैं थोड़ा पास में जाऊँ तो मैं जिस टाइम पे कॉलेज में था उस टाइम पे इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी ऑनलाइन कोर्सेज की. So we used to go to these type of offline centers, but because I was in Ghaziabad at that time, so traveling to Delhi was altogether a different thing, and that too on weekends या फिर कैसे भी manage करना था आपको. But then obviously after years everything became online. Even coding ninja के courses भी online ही है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है कि ठीक है आपको एक सपोर्ट मिल रहा है, आप पूछ सकते हो, आप चीज़ों का गाइडेंस भी ले सकते हो. एंड नाउ आई बिलीव देयर आर ऑल्सो कंसल्टिंग सेशंस एज वेल विच दे ऑफर. सो वो सारी चीज़ें थी. और उसके अलावा इफ़ आई टॉक अबाउट डे टू डे लाइफ, जैसे इन्होंने बात करी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड, नाउ इवन इफ़ आई गो बैक टू ब्लिंकिट और ये सब ग्रॉसरी स्पेसेस में भी बहुत सारे टेक बूम ही दिख रहा है कि हाँ ऑर्डर किया एंड इट कम्स इंस्टेंटली. तो वो सारी चीज़ें हैं डेफिनेटली जो हमारी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं. Is there something related to what you do at your workplace that has a certain impact? मतलब आपके पहले experiences से भी हो सकता है
कि कुछ आपने ऐसा बनाया था दैट मेड यू फील लाइक यार दिस इज रियली व्हाट आई एम प्राउड ऑफ, मतलब एक होता ना एक पीस ऑफ टेक आपने ऐसा बनाया दैट इम्पैक्टेड अ लॉट ऑफ लाइव्स, है ना, दैट नॉट नेसेसरली चेंज्ड योर्स, है ना, बट इम्पैक्टेड अ लॉट ऑफ अदर लाइव्स. सो ऐसा कुछ आप डिस्कस करना चाहोगे? Not exactly in that way, but हाँ जैसे जब I was in Adidas तो I used to see the counters, the live counters, where they also try to run something like कि this is the price fluctuation for some sort of products. तो वहाँ पे हमको ये चीज़ें दिखती थी कि हाँ यार इसकी कोडिंग हमने करी है और this is the product which they are showcasing live right now and how this प्रोडक्ट इज़ गेटिंग हॉट सेल्ड या फिर ये सारी चीज़ें आपको दिखती हैं साफ साफ, तो आपको लगता है कि हाँ दिस इज समथिंग विच वी आर डूइंग इन द बैक एंड विच इज़ एक्चुअली इम्पैक्टिंग आवर कस्टमर्स. So you also used to flex in Adidas store के मैंने बनाया. I was not flexing, but yeah, it's a good feeling to have it, right? Definitely. This is something you have created. I think end user experience अच्छा हो तो यार अच्छा लगता ही है, हाँ, that's because I true. think customer retention भी बहुत important होता है to have a job, and actually वही होता है, if your customers are not keeping up with the product then there's no point of working. So that is one thing. और access to technology, I think access to internet मैं कहूँगा इसको, this is access to internet only. I remember जब आज से 10 साल पहले गाने डाउनलोड करने होते थे ना, we used to have a website called songs.pk. Yes, yes, तो that's correct. 3 MB गाने होते थे, it used to take 10 minutes, और वो हम इंटरनेट चलाते थे by using लैंडलाइन और डायल अप मॉडेम लगा के. So वहाँ से अब शिफ्ट आ रहा है, we are totally wireless, ठीक है, फोन्स के अंदर इंटरनेट है, वाईफाई की स्पीड 100 Mbps गीगाबाइट से पहुंच चुकी है. So I think जब से इंटरनेट बूम आया ना, we have right access to internet. I think everything has changed, और इसके ही प्रोडक्ट्स में कहूँगा that is Ola, Uber, PayTM. I think, and still we are in early phase. I think अब पता नहीं और क्या क्या innovations आएंगे. There's a lot to come. So I think access to internet has actually made our lives better. True. Be it doctor's appointment, be it anything. Right. So with that, let's start with coding ninjas. कि coding ninjas हम लोगों ने किया है, मैंने भी किया है, शौर्य ने भी किया है, आप तीनों ने भी किया है. Let's start with your journey. कि कोडिंग निंजास कहाँ आया आपकी लाइफ में, कब आपको उसकी नीड महसूस हुई कि यार चलो अब कोर्स करते हैं, व्हाई डिड यू चूज कोडिंग निंजास एंड हाउ यू फीलिंग आफ्टर टेकिंग इट अप? लेट्स स्टार्ट. Okay, so for me, Coding Ninja came up after my first job. I started as a business analyst, and वहाँ से मुझे ये चीज़ें समझ में आने लगी थी कि जो कोडिंग बैकग्राउंड के लोग हैं वहाँ पे, they are actually having a very good प्रोजेक्ट, आई वुड से ग्रोथ पाथ उनके लिए थोड़ा ज़्यादा क्लियर था. उनको पता था कि उनको इसके बाद ये करना है, ये चीज़ें करनी है. तब दैट वाज द फेज व्हेन आई ऑप्टेड फॉर जावा वाला इनका कोर्स, कोडिंग निंजा का, और मैंने उसमें प्रॉपर सर्टिफिकेशन एंड ऑल एवरीथिंग किया. फिर उसके बाद आई एक्चुअली रियलाइज दैट देयर इज़ अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन व्हाट कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है और जिस तरीके से हमारे फंडामेंटल्स एक्चुअली बिल्ड होने चाहिए. एंड देन उसके बाद जब आपके इंटरव्यूज़ लाइन अप होते हैं, आपको दिखता है कि यार ऑब्वियसली आपने ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करी है, इंस्टेंट ये सपोर्ट है आपके पास, इवन आप इंटरव्यूज़ में भी कुछ गूफअप कर रहे हो तो आप उसको भी जाके डिस्कस कर सकते हो बाद में कि हाँ ये चीज़ की गाइडेंस ले सकते हो. तो मेरे लिए वो मोर और लेस जस्ट नॉट अबाउट द कोर्स, इट वाज आल्सो समवन होल्डिंग माय हैंड बैक एट दी होम कि हाँ ये कर लोगे तो कोई बताने को है, विच वॉज वेरी मिसिंग पॉइंट इन माई होल करियर उससे पहले का. तो मुझे कॉलेज में इतना ज़्यादा अवेयरनेस कह लो आप या फिर सपोर्ट का लैक कह लो, विच वॉज समथिंग, वो स्पेस जो फिल करना था ना वो कोडिंग निंजा ने मेरे लिए किया. I think having good mentors और वो TA support जो था, TA support is very crucial. Asking questions and your doubt queries. It's not just about asking questions, getting those resolved instantly is exactly that instant. important मतलब factor. रात के 1-1 2-2 बजे भी resolve हुए doubts. At any time फटाफट resolution. That's what TA is about. ठीक है, एंड इट्स नॉट लाइक कि वो 1-2 बजे भी, जैसे अभी सौम्य ने कहा 1-2 बजे भी हो रहा है तो वो कुछ ऐसे ही ठीक है टाल के कर दिया, नहीं, वो पूरा इन डेप्थ में जाके कि हाँ, एंड दे फोर्स यू टू थिंक दैट वे कि यार डोंट जस्ट टेक अर आंसर फॉर इट, थोड़ा सा सोचो, ठीक है, हिंट्स लो, देन गो टू द टीए सपोर्ट. अगर वहाँ से भी नहीं हो रहा है देन यू थिंक मोर अबाउट इट. वहाँ टीए तो और बैठे ही हैं आपको सपोर्ट करने के लिए. यू कैन अगेन एंड अगेन रेज डाउट्स बिकॉज दैट्स हाउ यू लर्न, राइट? Actually. It's about giving comprehensive answers, comprehensive results, क्योंकि वो बहुत important है, वरना again फिर it comes back to zero. Yogita, coming back to you. हाँ, तो हमारे कॉलेज में it was like कि अगर तुम्हें सक्सीड करना है, अच्छी प्लेसमेंट चाहिए,
तो कोडिंग निंजा से कोर्स ले लो, ऐसा था। Who told you that? Your seniors? Seniors, right? So ऐसा था, तो I took the course C++ with data structures in 2019, and एक तो course के like while the course was going on, एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा amazing जो लगी वो ये था कि they don't tell you how to do this question, like they tell you how to think about questions like this. So I was like कि अच्छा ऐसे भी तो पढ़ाया जा सकता था, ऐसे भी तो ऐसे ही पढ़ाना चाहिए कि how to think on your own. So this was really amazing, and मैं पहले भी बता रही थी, like in our college only one company used to come, so हमारा को मतलब इतनी knowledge नहीं थी about different companies and everything. But in coding ninjas, like you meet different people and you get to know, okay, this is where we can aim. तो उस चीज़ में काफ़ी it was helpful along with learning coding. So that was really helpful. Aniket. So I think similar to Yogita, but हमारे में ऐसा था कि a lot of seniors who weren't into CSE but went into coding jobs were very fast, मतलब were very pushing about coding jobs. So obviously when you go to them and ask about advice कि हमें भी जाना है, हम कैसे करें, तो they all recommended कि coding jobs का course ले लो. So I went ahead with Java and data structures and algorithms का course, and the best thing about the course for me was how nicely structured that was. So for to take an instance, एक अगर आप DSA शुरू करते हो और आपको नहीं पता, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहे हो, तो आप ऐसे DP से शुरू कर दोगे, ग्रीडी एल्गोरिथम से शुरू कर दोगे, तो आप दूसरे दिन पे छोड़ दोगे. तो द ट्रेजेक्टरी विच द कोडिंग जस्ट कोर्स फॉलोज इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. द मतलब सीक्वेंस में जैसे वो क्वेश्चन देते हैं, द इजी क्वेश्चन, द मीडियम क्वेश्चन, द हार्ड क्वेश्चंस, इवन देयर वीडियोस, द कॉन्सेप्ट्स आई एक्सप्लेन, वो एकदम से ही बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट आपको नहीं ला के दे देंगे कि आप डिमोटिवेट हो जाओ. द स्ट्रक्चर दैट दे फॉलो इज वेरी अमेजिंग एंड दैट मोटिवेट्स यू टू फॉलो थ्रू and complete the course in time. मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, डेडलाइन वाला सिनेरियो भी होता है ना. हाँ, कि अगर ये डेडलाइन मीट नहीं करी तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा. दैट इज आल्सो मोटिवेटिंग इन इटसेल्फ. ठीक है कि वो आपको थोड़ा रहता है कि यार, वरना ऐसा होता है कि कई बार हम लोग कोर्स लेते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है कर लेंगे. बट व्हेन यू हैव एन एंड गोल जो कि वेरी क्लोज टू आपके प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है कि हाँ कोर्स कर लिया तो 2 साल में नौकरी लग जाएगी, नहीं. एक है, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, दैट विल हेल्प यू फ्लॉन्ट योर अचीवमेंट्स ऑन लिंक्डइन. That will help you validate your learnings apart from आप जो भी competitions वगैरह करोगे, जो भी उससे आपकी winnings रहेंगी, तो that is also motivating enough. आपने 60% 90% कंप्लीट नहीं किया तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा. हाँ, exactly. That certificate ठीक है, you can wear it as a badge. हाँ, I completed this and it course. is, yeah. I think मेरे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था ना, वो था यार पैसे लगाना, राइट. यू नो, जब तक आप कहीं पे पैसे नहीं लगाते ना, you don't feel the work. Honestly, I have some courses that I bought for free, but I've never completed them because I don't have a push to complete them. But you know, जब आप पैसे लगा के कोर्स लेते ना, तो यार करना पड़ता है, कैसे भी करो, right? Because then it's a waste. So मेरे लिए ऐसा ही था कि जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में था, right, तो मैं एक दोस्त के रूम में गया था and I saw him doing this. तो मैंने वहाँ से मतलब मेरी जर्नी, I won't speak much about it, but मैंने किसी दोस्त को देख के कोर्स लिया था and I had zero experience, मतलब कोई prior experience नहीं था. I started up with it because I like the UI UX, जो how the I mean अंकुश सर कैसे पढ़ाते थे, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ because I really like the way he teach. वो easy beginning वाले बच्चों के लिए, जो beginners होते हैं ना, उनके लिए कोर्स बहुत अच्छा है. मतलब I would not recommend कि कोई intermediate के लिए, but it is for beginner student जो starting से end तक सीखना चाहता है ना. यहाँ पे एकदम जीरो लेवल से 100 लेवल तक का जो भी बीच का है सब कुछ कवर होता है, इसलिए I took it. एंड देन आई स्टार्टेड. और उसके बाद टीए सपोर्ट जो आप लोगों ने डिस्कस किया, एंड उसके बाद स्टाइपेंड भी मिलता है, तो आई एम श्योर हम लोग उसके बारे में क्यों बात नहीं करेंगे. स्टाइपेंड भी मिलता है गाइस, तो वो भी बहुत अच्छी बात थी. एंड जो डाउट सपोर्ट और ये सब थे, दिस वाज सम एडिशंस. मैंने इंट्रोडक्शन टू C++ के अलावा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का भी कोर्स किया था, बिकॉज मेरे को एक पॉइंट के बाद प्रोग्रामिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने लग गई थी. तो आई ऑल्सो टुक दी CP वाला कोर्स जो पारिक सर ने सिखाया था, एंड सेम थिंग फॉर इट एज वेल. तो मेरे को तो बड़ा मजा आया, एंड मनी वॉज इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मैंने पैसे लगाए थे तो मेरे को करना था, फ्री में नहीं करता शायद. तो या दैट्स इट. So guys, let's talk about कि अब जैसे चैट GPT का वो है टाइम है, राइट. AI LLMs, that's the time we are living in. हमारे जो पिछली जनरेशन थी, दैट यूज्ड टू, उनके लिए ये टाइम था इंटरनेट बूम का, दैट वी ऑल टॉक्ड अबाउट, राइट. तो हमारे लिए इट्स सिमिलर टू AI बूम. सो हाउ आर यू गाइज एक्लामेटाइजिंग टू चैट GPT? आर यू टेकिंग इट अप एज योर राइवल, या फिर
अपना पर्सनल जावेस मान के लाइक आई पर्सनली डू लाइक मेरे को कुछ भी दिक्कत होती है हाँ भाई ये कर दे मेरा या फिर इफ आई हैव सम एरंड टू रन की ठीक है ये वाला दिमाग खराब हो रहा है डू दिस ऑर्गेनाइज करके बता दे सो दैट्स हाउ आई यूज चैट जीपीटी ठीक है आई यूज इट एज माय पर्सनल असिस्टेंट व्हाट डू यू गाइस यूज इट एज कि अपना पूरा डेली वर्क डे में कैसे यूज करते हो इन जनरल कैसे यूज करते हो व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि इज एआई गोना टेक अप योर जॉब्स I think Shaurya, you're right. I do the similar because I also think कि आप ChatGPT से compete करके कुछ नहीं अचीव कर पाओगे. You can only use it as a assistant, as a help. Yes. And a lot of boilerplate code that you had to write पहले बैठ के 2 घंटे लिखना है. तुम्हें पता है बहुत Manual boilerplate effort code काफी कम है. हो जाता Manual है effort उससे बहुत कम हो जाता है. तो पहले भी तुम Stack Overflow में एक query ढूंढने के लिए Right. 2 घंटे लगाते थे कि फिर questions देख रहे हो कि ये correct answer है ये. Now you can shorten that time. So that is in effect making us more efficient. And I believe that will continue. I don't think jobs इतनी जल्दी चली जाएंगी engineers, software engineers की especially because of ChatGPT. It will only strengthen them and make them more efficient and productive, I believe, in the job. So, in Amazon, we don't have Chat GPT. We use generative AI tool, Amazon Q. So, and हमें help करने से ज़्यादा it is helping customers because customers earlier used to reach out for basic queries like how to do this, how to do this. So now they can only ask Amazon Q this question, how to wale questions, and now they come up with us with difficult questions. So AI has made your job a little difficult. like easy questions now no one is asking. It's like that. And job though I don't think because customers want if their production is down they want some personalized support, human support who can help them. So jobs का ऐसे अभी तो नहीं जा रही. मैं आता हूँ उस बात पे अभी. सौम्य आपके थॉट्स इस पे? तो मेरे को अगर मैं अपने डे टू डे की बात करूँ तो हाँ आई टेक हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी जहाँ भी कुछ फंसता है मोस्टली कोड ऑप्टिमाइजेशन वाले चीज़ों में. बट एट द सेम टाइम रही जॉब्स जाने की बात तो आई डोंट थिंक होमसेवर इज़ अ गुड इंजीनियर जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं बाकी चीज़ें ठीक हैं तो उसको वो हेल्प ही करेगा. इट वॉन्ट टेक हिज जॉब बट एट द सेम टाइम या जो बहुत ही मैनुअल टाइप की जॉब्स हैं या फिर बहुत ही जिनमें टेक्स्ट बहुत लिमिटेड है और ये सब है डेफिनेटली दे आर प्रोन टू गेटिंग एलिमिनेटेड बिकॉज ऑफ द एआई बूम. बट अभी करंट इंडस्ट्री में इट्स ऑल आई डोंट थिंक एनीथिंग That point I'd like to add कि यार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे हम इस वीडियो की बात करें तो each of us holds a very different experience and is dedicated to a very different problem to solve, right? So AI इतना easily I don't think so. My personal opinion is कि उस हर टास्क पे इतना अच्छे से acclimatize नहीं हो पाएगा कि वो उतने personal effort से उतने because solving problems like Aniket is doing at PayTM it requires a certain human intellect कि you resonate with the customer and then you build something out of it. See, it's like when you have 100%, right? It might be कि 80% आपका task might your AI do, right? जैसे for example, let's say I'm talking about a scenario wherein I want to write a unit test, right? So AI can check in the file and write a unit test for you, but it would still lack. So But it wouldn't know what unit test to cover. थोड़ा human intervention तो चाहिएगा, लेकिन yeah, it can certainly take up कुछ jobs. ठीक है, मैं ऐसे नहीं कहूँगा जो छोटे automation jobs होते हैं, it might take up. Now, have you heard of chat dev? किसी ने सुना है chat dev? I think हार्वर्ड के स्टूडेंट्स ने ना एक एप्लीकेशन बनाई है chat dev. It has like few folks जिसके अंदर एक मैनेजर है, एक CEO है, एक CTO है, there are 5 developers, एक डिजाइन करने वाला है, and it's an application, right? You just have to give कि तुम्हें क्या बनाना है. Let's say, hey, can you please build me a ping pong game? वो तुमसे रिक्वायरमेंट पूछेगा just like you ask from PMs. And they'll give you a visualization जिसके अंदर ना PMs आपस में बात कर रहे हैं, 2 chatbots बात कर रहे हैं. You can actually see their conversation कि PMs कैसे बात कर रहे हैं, designers कैसे बात कर रहे हैं, requirements कैसे सेट हो रही है, कुछ बग आ रहा है, बग कैसे फिक्स हो रहा है. मतलब it's whole It's the orchestrated. universe of metaverse and ChatGPT. And at the end they're actually giving you the product as well. मतलब you can just go and search. It's for the viewers as well कि आप लोग chat dev जाके search कर सकते हैं. And it's a whole application and they are actually building it. So यहाँ से it might be कि कुछ jobs जा सकती है. I don't know where we'll go, but yeah, certainly. Coming back to point कि chat GPT ये कैसे help करता है, तो I think again
it is both for devs या फिर end users. They both have different use cases. When you talk about products, it's like products में जो customers होते हैं वो they are using it up to ease their access. For example, my product. For analysts, it's very complicated to go and set up a query, set up a custom query, right? So Chat GPT might help you. It actually helps you in make that process shorten. It actually helps in that. For us, जैसा सौम्य ने बताया कि हम लोग थोड़े optimizations देख लेते हैं. मान लो कुछ कोड समझ नहीं आ रहा जो किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ है, स्काला में लिखा हुआ है, लेकिन स्टिल डिबग करना है तो it's a better way, right? So yeah, थोड़ा हेल्प तो करता ही है. And if you are now at this position, ठीक है, let's say कि चैट जीपीटी अभी नहीं आया होता, it would have been in जब आप सेकंड या थर्ड ईयर में होते, then तो सिनेरियो क्या रहता? How would you use it for your अपना कॉलेज जर्नी के लिए, कॉलेज स्टडीज को मैनेज करने के लिए, and for also your placement preparation? Assignments. उसके अलावा असाइनमेंट्स हो गए, ठीक है, प्रोजेक्ट्स. आई थिंक प्रोजेक्ट्स भी आप मैनेज कर सकते हो उससे कि हाँ प्रोजेक्ट के आइडियाज ले लिए या फिर जो रिपोर्ट वगैरह है. लाइक आई विल टेल यू, मेरे एक फ्रेंड्स थे तो उन्होंने अपना जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट होता है ना, रिसर्च पेपर लिखना होता है, तो वो उससे उन्होंने पूरा लिखवाया एंड दे रैन इट थ्रू द चेकिंग अपना पूरा कि हाँ प्लैगरिज्म चेकर वगैरह से प्रॉपर. बट ऑन द फाइनल डे पता नहीं समहाउ उनका पेपर पूरा का पूरा that got saved into the database of the plagiarism checker. Either it was through chat GPT या फिर वो उन्हीं के कोड में कुछ दिक्कत थी, तो उनकी पूरी 4 महीने की मेहनत all gone. क्यों? क्योंकि वो पूरा उनके डेटाबेस में चला गया, सारे कीवर्ड्स. So मेरे ख्याल असाइनमेंट्स इज द वन थिंग जहाँ पे आप लोग सेकेंड टू थर्ड ईयर वाले कॉलेज स्टूडेंट्स के तरीके से आप यू कैन यूज चैट जीपीटी. बट लेट्स से कि प्लेसमेंट्स के लिए भी अगर हमें यूज़ करना हो, हाउ कैन वी यूज चैट जीपीटी फॉर प्लेसमेंट्स इन सेकेंड और थर्ड ईयर? I think for interview preparation or planning, ChatGPT is really useful. तो आप मतलब I've tried this a couple of times. You ask ChatGPT कि आपको 3 months के बाद आपकी interviews start होने वाली है and company placement start होने वाली है and make me a plan how can I prepare for a software engineering role. It literally gives you a plan step by step कि आप ये करो preparing on the data. And also आपको अगर interview questions पूछने, ask me DSA questions of this difficulty, ask me DSA questions from this topic, ask me operating system questions, DBMS questions, ask me most asked interview questions. So वो literally question and उसके answers how you should be reply and also behavioral questions, everything. So that becomes very easy because without that आपको internet पे literally बैठ के videos देखनी पड़ेंगी, articles के through जाना पड़ेगा and that will be very hectic. I think you're a बहुत important point इसका behavioral question. That is important because हम लोग सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स होती है ना हम लोग को आंसर करने में, बिकॉज यू डोंट हैव मल्टीपल पॉइंट्स टू आंसर दैट. तो आई थिंक बिहेवियरल क्वेश्चंस में प्रैक्टिस भी नहीं होती, बट आई डोंट नो हाउ चैट जीपीटी मैनेजेस इट, बट या इट्स अ गुड थिंग. और टेक्निकल क्वेश्चंस तो आई थिंक चैट जीपीटी इज वेरी गुड. एटलीस्ट 2022 तक जो लेटेस्ट अपडेट आया शायद वहीं तक ही है, बट अगेन it's a very good resource to see things. For students, as you said, I think you mentioned it all. I think whenever I had to go and look up some topics, for example, let's say I want to look at segment trees, तो मैं segment trees जाके सीधा लिख देता हूँ उधर क्या segment trees समझा दो. And in fact you can also take up their answer and ask them, hey, can you please summarize it? Exactly. And can or can you actually optimize it, है ना? तो आप optimization के question पूछ सकते हो. तो this is how I actually use it. तो कभी कभी जैसे मेरे को कोई algorithm समझ नहीं आ रही होती तो I actually ask it कि यार ये algorithm समझा along with example, तो proper it actually builds your table. True. वो टेबल भी बना देता है, मतलब it's like your TA out of coding ninja. मतलब मैं आज से 2 साल पहले ये सोच नहीं सकता था कि कोई मेरे को एग्जाम्पल के थ्रू इतना जल्दी समझा देगा. एंड यू कैन एक्चुअली आस्क एग्जाम्पल की वो पूरा टेबल बना रहा है, इट इज ऑप्टिमाइजिंग योर क्वेरी, तो फिर आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आप पूछो. बट थोड़ा प्राइवेसी कंसर्न्स है तो उसका ध्यान रखना, बिकॉज दैट यू शुडंट यूज योर डेटा. अगर जो कंप्लायंस रिलेटेड हो तो उसका ध्यान रखिए बस. बाकी आई थिंक ऑल इज गुड टिल यू हैव जेनरिक थिंग्स. सौम्या, यहाँ पे हम लोग अभी जो बैठे हुए हैं, आप सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हो अभी हम सब में से. तो आई वांट टू नो मोर अबाउट योर जर्नी कि कैसे रही स्टार्टिंग से एंड टिल वेयर यू आर राइट नाउ. ओके, सो श्योर इट वाज लाइक जैसा कि मैंने पहले बताया कि कॉलेज से बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं थी और आई वॉज प्रीटी अवेयर कि हाँ ठीक है ऑफलाइन में थोड़े धक्के खाने पड़ सकते हैं. तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई फंडामेंटल्स. कोडिंग निंजा की मैंने हेल्प ली थी उस टाइम भी, और आई स्टार्टेड बिल्डिंग ऑन द कंसेप्ट्स एंड एवरीथिंग एल्स. देन ऑफ कैंपस में मेरा सिलेक्शन ज़ेरॉक्स में हुआ था,
तो it was around, I still remember the drive because first company सबको याद रहती है. Right. So 204 candidates were there and 4 were selected by the end of the day. So I was among one of them. And then उसके बाद वहाँ BA का breakthrough था. तो for me it was not, at that point of time I was not into that position कि हाँ मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होगी तभी मैं इंटर करूँगा कॉर्पोरेट्स में, ऐसा कुछ नहीं था. बट देन इट स्टार्टेड वेल ऑफ फ्रॉम देयर. वहाँ जाके आपको लर्निंग और होती है तो आपको समझ आता है कि नहीं वहाँ पे करियर ग्रोथ पाथ ज़्यादा बेटर है. देन अगेन आई took the Java with data structures and everything. Then वहाँ से फिर मैंने स्विच किया यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप में. यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप के बाद आई केम टू Adidas and at point of Adidas I also at the point of somewhere in between United Health Group and Adidas I also started learning a lot about machine learning and data science. I also took a course at that point of time as well. तो वहाँ पे and then after Adidas it's now in a leading bank and वहाँ पे AVP की position है. तो this is more like a whole journey. But yeah, that was quite a shift from BA to software engineer and now into sort of. मेरा इस पे follow up question यार थोड़ा सा naive हो सकता है. Like what does a software engineer do in Adidas? Okay, so software engineers pretty much do in Adidas what any software engineer does in an e-commerce company. We handle the retail portals, corporate portals. उसमें क्या bugs आ रहे हैं, क्या issues आ रहे हैं, products किस तरीके से display हुए हैं, किस region में हमें कौन सा product दिखाना है, किस में क्या है, discounts, बाकी सारी चीज़ों की coding. So everything is there what you can expect from a full-fledged e-commerce portal. Got it. Right. Yeah. Coming back to you, Yogita. थोड़ा सा एक बारी डीमिस्टिफाई करो कि क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर क्या होता है, क्लाउड इंजीनियर क्या होता है, एंड व्हाट इज क्लाउड ऑल अबाउट. लाइक एड्रेस टू अ सेकंड या थर्ड ईयर फेलो जो कि आपका कॉलेज में जूनियर है, उसको आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताओ कि व्हाट इज ऑल अबाउट. Sure. So firstly, cloud are remote servers, and you can access those servers over internet, and like you can use those servers for storing data and compute and automations. So suppose you're building a startup, and that startup requires storing data of customers, storing thousands of TBs of data of customers. So now you don't have to buy actual hard drives to store that data. You can just purchase a cloud, and then you can like build upon that. So like the requirement of physical infrastructure is not there because of cloud. And now coming to cloud support engineer, AWS is a cloud provider. So obviously if they are providing the cloud, they have to support it also. From small startups to big companies, people are using cloud, and if they are facing any issue, then we are the frontline engineers that help them to troubleshoot their issues. If they are facing any issue with like provisioning the cloud, or their performance is not good, so cloud support engineers help with that. And we help via chat support, call support, and email support. Let's start with Aniket. Aniket, you've joined PayTM, right? तो अपना पूरा role बता दे. And what special advice you would give to second year and third year kids, right? Because again we focus on those kids की सिर्फ अपन नहीं, बाकी जितने बच्चे हैं, they also reach their destination X, तो हम लोग को वो भी answer करना है. So let's start with what advice you would give to a second year or a third year student, irrespective of our college. Okay, right. In terms of developing and preparing for interviews, I would like to focus on don't just prepare questions as in solve questions that you get. Be very thorough about the concept you are using. So as an example, I would like to tell you that while interviewing for PayTM, I was asked to solve a question which used hash maps. So as you would know, many of you, that hash maps are used where we require O1 of retrieval. Like at the time complexity should be O1 because it's a quick retrieval method. But then again, the interview then went ahead and asked me that why do you think hash maps is a structure that it is possible for us to it is possible to have O1 retrieval
in hash maps. So I remember it was very clearly explained to us in Coding Ninja's videos, and it was very thoroughly explained how hash maps literally work on the back end, how the data is stored, in what forms the chaining occurs, how hashing occurs, and then because of hashing, how you are able to retrieve data. So by that explanation, I remember that explanation very clearly from the videos of Coding Collision Ninjas. method and separate chaining. Right, correct, exactly. And I was able to explain that in PayTM interviews, and they were really impressed. So that is one thing I would like to highlight, is that don't just solve questions and look through answers. Be very thorough with the concept you are solving. Be very thorough with the data structures that you are implementing. And do not just skip it thinking कि अब तो आंसर आ गया और सक्सेस हो गया है तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Yeah, that is something I would like. What about Soumya and Yogita, second year, third year के लिए कुछ specific advice अगर अपन देना चाहें तो क्या दे सकते हैं? For me, I would say that everyone, irrespective of second year or third year student, everyone should actually build their fundamentals, and they can take support from seniors, and if they can access the Coding Ninja course, that will be very good. And and really work hard, and it will be a smooth journey. Irrespective of whether you are from tier 2 or tier 3, doesn't really matter. Yeah, so don't just focus on coding. Like along with that, you should study about the subjects like operating system, networking, because my interview was based on these two subjects only. So these are also important. So focus on these also. I think let's Shaura and me sum it up. I think subjects, core science subjects, course computer science subjects are very important, whether it comes to operating system, system design. ये हम लोग को आना ही चाहिए. I think it is expected for everyone of us. Secondly, when it comes to coding, I think मैं जैसे सबको कहता हूँ कि just do practice, right? There is no specific set कि आपको ये करना है, ठीक है? I would say कि यार practice करते रहो, do questions जितना कर सकते हो उतना करो. And one thing जो मेरे को personally बहुत पसंद है, which I tell to second year students, third year, first year student, is कि try to use contest based approach, right? Because जैसा मेरे को ही काफी बार फील हुआ है, when I switch to multiple platforms, I see repetitive questions, ठीक है? Because जैसे hash map अभी अनिकेत ने बोला, we have specific question. Hash map में क्या कर लोगे? You can find frequencies, मतलब there are multiple implications, but same चीजें repeat होती है. तो if you go with contest based approach, right, you're going to see new questions, और यही तुम्हें ना interviews में help करता है, because हमें सिर्फ कोर्स कंप्लीट नहीं करना है, वी हैव टू केटर इंटरव्यूज एज वेल, हमारे को वो भी पार करने हैं, राइट? तो इंटरव्यूज के लिए तुम अगर अनसीन क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से करो, यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, तो ये बहुत हेल्प करेगा अलोंग विद एप्टीट्यूड. एनीथिंग एल्स शौर्य? कंप्लीटली एग्रीड. आई गेस आपने पूरा अच्छे से उसको समराइज करा कि यू डोंट जस्ट नीड टू फॉलो अप कि कितना कितना कोर्स में है. अगर आप कोर्स कर रहे हो सिर्फ, ठीक है, गो एंड चेक आउट कोडिंग निंजा स्टूडियो एज वेल. उसमें भी आपको बहुत सारा लर्निंग मटेरियल मिलता है, ठीक है. एंड completely different क्वेश्चंस होते हैं, प्लेथोरा ऑफ क्वेश्चंस हैं, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस हैं, फ्रॉम वेयर यू कैन नो कि अच्छा चलो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था इंटरव्यू में, इस तरीके से इसका आंसर और हो सकता है, राइट? इट्स नॉट जस्ट अबाउट सॉल्विंग इट, राइट? नमन, जैसे आपने कहा कि कॉन्टेस्ट बेस्ड अप्रोच करो, तो कॉन्टेस्ट तो दे दिया, बट उसका सोल्यूशन सबमिट हो गया, उतना तक काफ़ी नहीं है. ट्राई एंड अप सॉल्व इट, ट्राई रीड द ट्यूटोरियल्स जो उसके आ रहे हैं, सो दैट यू आर ऑलवेज ऑन द फ्रंट फुट ऑफ योर सेल्फ कि हाँ यार ये क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व हो सकता था. इट वॉज नॉट नेसेसरली द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच, बट ठीक है, मेरी काम कर गई, शायद हो सकता है तुक्का लग गया, राइट? तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अच्छा, वीकेंड कॉन्टेस्ट के सॉल्यूशंस भी देख लिया करो. मैं आई पुट इट एवरी टाइम, तो आई थिंक वो तुम लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा, बिकॉज लास्ट क्वेश्चन तक आते आते तुम बहुत सारी चीज़ें सीखते हो. लास्ट क्वेश्चन में बहुत इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स होती है जहाँ पे तुम लोग नई चीज़ें सीखते हो. तो विद कॉन्टेस्ट ड्रिवन अप्रोच, आई थिंक यू विल बी एबल टू गो टू योर फेवरेट position, your favorite company, your own destination X, and I think that is what we were all looking for in our college life, and I think we are all here. So guys, now we'll move on to the second segment or another part of the podcast where मैं आप लोगों से कुछ questions पूछूंगा या फिर कुछ एक statements दूंगा, and very candidly you guys have to say either you agree to it or disagree to it. अगर मन करे तो उस पर थोड़ा सा अपना point of view भी रख सकते हो. So starting with कि we should be scared of the AI developments. I disagree. I don't think we should be scared of them, but I would rather ask people to use them, not be scared. I think I too disagree, because हमें वो use करना चाहिए to make efficient approaches, right? It's rather smart work rather than doing hard work. I also disagree, because it is also helping us. Got it.
So moving on to the another one, that DSA is the most important part in securing a good job. Starting with you, Soumya. I disagree with that. You also have to look at the components of this spectrum. DSA सब कुछ नहीं है, and I have seen people who have landed pretty good jobs without the help, everything about DSA. So, yeah. I also disagree. My job role didn't require knowledge of DSA, so I disagree. I would disagree because mainly DSA is required if we want to get into product-based companies, not really if you want to get into really good startups. They really focus on your developmental skills and what you have developmental now more than DSA. What are your thoughts, Naman? I disagree because there are things that you're going to learn when you're going to get into a company, right? Because as Soumya said, the spectrum is too wide, right? There's a lot to learn, so you cannot just skew it to just single DSA. Even if you are good at database, just go and become a database engineer, right? So it won't require you something else. So it's like it's a wide spectrum, and there are a lot of things to learn and get away. That's it. All right, let's move to another one. So the next one is that using Chat GPT at work should not be allowed. I disagree with that too. I think it should be allowed. If anything, what it does is increases productivity and efficiency of a developer and enables it to ship software quickly. That's it. I disagree as well. As Aniket pointed out, that anything which is helping us to build the software fast and ship it quickly to the customer, it definitely helps and it should not be avoided. But yeah, it's just that we should be knowing how to use it efficiently. Right. I agree. It should not be allowed because sometimes it gives incorrect answers. So in that cases, it should not be allowed. Okay. So I think I too disagree, because what we actually require is, to ship things fastly, and we require smart work, right? A lot of times, just seeing the code, it takes us a lot of time to debug things and understand. So it's better if AI is helping us to understand things in a faster manner. So I shouldn't be. But yeah, use it in the best possible manner, efficiently. अच्छे से use करो, because there are multiple compliance and privacy things, because it's a standard pool, right? तो कैसे use करना है, this is on us. तो ध्यान से use करो, तो I think it's good. Right. All right. So the next one is that सबको coding करना आना चाहिए as a very basic skill. I don't think, I disagree with it too, because coding in itself is a world, but अगर आपको नहीं करनी है और आपको फिर भी एक अच्छी लाइफ चाहिए और जॉब चाहिए, तो इट्स पॉसिबल विदाउट डूइंग कोडिंग ऑल्सो. अगर करनी है तो बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, नहीं करनी है और कुछ और करना है तो उसके भी बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं. इफ़ यू नो अबाउट इट, तो इट्स गुड गोइंग टू बी फाइन. सो आई डिसएग्री. I also second the thoughts of Aniket. ज़रूरी नहीं है लाइफ में सब कुछ कोडिंग ही नहीं है. बहुत कुछ और भी है करने को, and there are avenues to explore. आपको figure out करना है कि what you are actually good at, and if you really work hard there, it would be good. At the end of the day, results will be more or less the same. Naman? I think बहुत सारी jobs है यार. I mean सिर्फ coding क्यों करनी है? For college people, it's like college में क्या है, technical बैकग्राउंड वाले बच्चों के पास they don't have much options to explore, right? आपके colleges में coding के अलावा companies नहीं आएगी. That's why people go and do it. But when you come out of the college, आप MBA करो, you meet people out of your college. There are vast options, right? यार business है, या आप MBA की side जाओ. So it's just that you have to explore. Coding सब कुछ नहीं है, but yeah, again, that's the thing. Same. All right. This question I'll like to start with Naman. Paid courses are overrated. Do you disagree with that or agree with it? What I would say, I think I don't have a fair judgment to it, but yeah, what I would say is, till the point, if you think that paid course is helping you, right, and it's a standard platform, I don't think taking up it is bad, till the point that you have certain outcomes. And yeah, I'm the one who actually take paid courses, because for me, see, for a lot of people, money is very important. Like if you talk about college kids, they don't want to spend money, right? But if you won't spend money, you won't have that, you won't feel the importance of taking that up. So that's one thing that I would actually look up to. So इसलिए मैंने काफी courses लिए paid, so that I do complete them. So yeah. Soumya?
I also disagree that paid courses are overrated because I think that even if, let's say, talk about coding ninjas, the courses are paid, but the TA support, the other things which we get is definitely the bang for your bucks. So that is something I don't think paid courses are overrated. वो ROI आपका निकल ही आता है कहीं ना कहीं और फ्री कोर्सेज अगर आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आपको एक पेड कोर्स लेना चाहिए. Makes sense. Yeah, same thing like he mentioned that वो ROI कहीं निकल ही आता है. Like I think that education is the best investment. So if you can invest, then you should. I don't think I either agree or disagree because it really depends on the course. There are a lot of very good paid courses that you should take, and there are a lot of not so good courses that you should avoid maybe. So maybe on the face of it, I can't say if I agree or disagree. But if it is a good paid course, you should not stay away from it just because it is a paid course. It's really going to help you. And the next one is that Python is the best programming language for beginners. I don't think I can ever answer if something is the best programming language, but For beginners. for beginners, Yes. I would disagree to that because I started with Java and I felt really comfortable doing Java because there was a certain structure to it which helped me stay focused and helped me thought through the concepts of oops कि आपने एक semicolon नहीं लगाया तो ये problematic है, and that is how you learn the mechanics of this. So maybe it's a little old school now Java, but I think someone should start with a strictly typed object-oriented programming language if they're starting. Same, I believe that I started with C++, so it was also like beginner friendly, so it is also good. I started with Java too, but yeah, I certainly feel that Python is pretty easy to learn for a beginner. So yeah, if somebody is just starting out and they want to explore everything, so Python is a good option. I completely agree with that. Yeah. I think, yeah, I agree. Python is easier to learn. You know, when you talk about, so I'm just talking about beginners, right? अगर हमको beginners की बात करनी है तो if you go to Java and C++, so these languages are very strict and they are machine friendly, right? आपको कुछ integer बनाना है तो आपको integer define करना पड़ेगा. But you know, when a guy comes to Python, it's like just go with the variable. It's very user friendly and you can start with it. आपको print के लिए print लिखना है यार, मतलब what else would you want? Cout नहीं करना. हाँ, तो it's like cout के बाद ही आपको वो लगाने पड़ते हैं signs. So greater than, less than वाले signs लगाने पड़ते हैं, comparison signs. So it makes Python more intuitive for beginners. There might be, you know, some drawbacks, but वो हर language के होता है. But if you talk about easy language, I would Like मेरा personal point of view तो इसमें ये है कि यार अगर आपको मतलब explore करना है ना, you're not very sure about कि coding मेरे लिए है या नहीं है, if I can do coding or not, आपको ज़्यादा effort नहीं डालना, because when you're trying to explore stuff, you don't want to put much effort into it, है ना, वो वहीं सारी energy आपकी drain out हो जाएगी. So you can start out with Python, ठीक है, देखा कि हाँ अच्छा ये ऐसे होता है वैसे होता है, this is the gist of it. आपको मजा आ रहा है उसमें, because coding चाहे एक language में करो दूसरी language में करो, coding है ना, you're solving problems either one way or the other way, right? So you can take the gist of it. फिर उसके बाद you can decide on कि हाँ ठीक है ये वाली अब मेरे को language अच्छी लग रही है, if it's serving my purpose, like machine learning है, data science है, you have only two options, R है या फिर आपके पास Python है वहाँ पे, right? So वही अपनी functionality के हिसाब से you can later tailor it. Alright, moving to the next one, that a 4-year college degree is no longer necessary for success in workforce. I think I disagree. It's still, I mean, we are not there yet that it's not necessary. It is still necessary. A lot of job openings have this requirement that you have to have a degree, and a lot of them require you have a degree from a good college, in fact, but that's not a lot. But I think we are not there yet that we could say that it's not required, absolutely. I think Soumya would have a better answer to this, but you know, मैंने एक बार senior से I really asked this question, but you know, degree का सबसे important चीज़ ये होती है that जो आपका interview ले रहा है, right? The company, they get to know that the guy has diligently completed a course, right? इसका मतलब ये नहीं होता that they actually don't see कि आप 9.8 CGPA हो, 9.5 हो या 8 CGPA हो. That is just to tell them that hey, this guy diligently completed the course and he was there to complete it for 4 years. So सिर्फ उस चीज का महत्व होता है. Right, absolutely. Right. So that is what they actually look for कि यार अगर मैं इस बंदे को हायर करूंगा तो ये रुकेगा. And he would complete. He would complete. Correct. So महत्व है. Soumya, your words on that?
मेरा भी more or less similar thought है, but at the same time the kind of exposure you get into that 4 years of college life ना वो भी important है. मतलब जैसा आपने कहा कि coding is not everything, तो हर चीज़ इंटरनेट पे बैठ के या रिमोटली बैठ के नहीं हो सकती. आप कलीग से जितना सीखते हो, आप अपने फ्रेंड से जितना सीखते हो, तुम क्या कर रहे हो, वो एक्सपोजर मिलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. There's always someone you can talk to and there's a support system which you built in college which lasts for years. That's also very important. Same. So academically, I think it is not that important, but the networking you build and Right. other things are really important. Experiences that you have Hmm. in college. Yeah. With this, we come to the end of our podcast. Thank you guys for watching this, and I hope इससे आपको बहुत सारी actionable insights मिली होंगी. And if so, don't forget to comment them down in the comment section so that your peers can also learn from them. Do comment your learnings, your findings, or any interesting bit that you found out from this podcast in the comment section below. Once again, thank you guys for coming over to Coding Ninja's YouTube channel. Thank It you was for a having very, us. very deep pleasure to have all of you here and share your insights. Thank And you guys, stay tuned for the next episode of the podcast series Destination X. Thank you.